घर में अगर कोई बच्चा बार बार गलती करे और हर बार कहे अब की बार नहीं करूंगा, तो माँ भी एक दिन झाड़ू उठा ही लेती है। कुछ ऐसा ही अब सुप्रीम कोर्ट ने किया है। कोर्ट का झाड़ू उठा है और निशाने पर है ईडी, सीबीआई और पुलिस, क्योंकि अब अदालत ने कह दिया है कि किसी की गिरफ्तारी से पहले लिखित जानकारी जरूरी है। अब सोचिए, वो जमाना गया जब सुबह 6 बजे दरवाजा खटखटाया जाता था और कहा जाता था हमारे साथ चलिए, पूछताछ करनी है। अब देश की सबसे बड़ी अदालत ने इस अंधेरे में उठाई जाने वाली गिरफ्तारियों पर लाल रेखा खींच दी है। लगता है अब कोर्ट भी तंग आ गया है सरकार के एजेंसी राज से। कभी ईडी का बुलावा, कभी सीबीआई का रेला, और हर केस में एक ही टारगेट, सरकार के विरोधी या असहमत लोग। सुप्रीम कोर्ट ने अब सीधे कहा है कि अब मनमानी नहीं चलेगी। सोचिए, ये वही कोर्ट है जो महीनों से सरकार के फैसलों पर हम देख रहे हैं कहकर चुप रहता था, लेकिन अब बोल पड़ा है और इस बार आवाज में गुस्सा साफ है। कोर्ट को भी लगने लगा है कि अगर एजेंसियां बिना लिखित कारण बताए किसी को पकड़ने निकल जाए तो फिर लोकतंत्र का क्या बचेगा। परंतु बात अपनी पर से अब बन जाएगी। अफसर सोच में हैं कि अब कैसे करे सर्जिकल स्ट्राइक वाले छापे। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि अब किसी को गिरफ्तार करना है, क्यों, किस वजह से, किस सबूत पर। यानी अब ऑर्डर ऊपर से आया है वाला बहाना नहीं चलेगा। अब फाइल चाहिए, साइन चाहिए और जिम्मेदारी भी तय होगी। दिलचस्प बात यह है कि जैसे जैसे चुनाव पास आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की टोन भी बदल रही है। पहले जो अदालत सरकार के कदमों की प्रशंसा में लगी लगती थी, अब वही कह रही है संविधान सिर्फ सरकार का नहीं, जनता का भी है। और ये लाइन सीधे दिल पर लगी होगी, क्योंकि इस वक्त सरकार को ईडी और सीबीआई जैसे औजार की सख्त जरूरत है। और अब अगर ये औजार कोर्ट के शिकंजे में है तो राजनीतिक मैदान में बहुत कुछ बदल सकता है। अब विरोधी खेमे में हंसी और ताली दोनों है। सब कह रहे हैं देखो, देर से ही सही लेकिन न्याय मिला। मगर सवाल ये भी उठता है कि ये सख्ती अब क्यों? जब हजारों नेताओं पर छापे पड़े, जब बिजनेसमैन भागे, जब पत्रकारों पर केस बने, तब ये लाल रेखा कहां थी? कोर्ट के कुछ आलोचक कह रहे हैं कि ये फैसला रिटायरमेंट टाइम इंटेग्रिटी शो जैसा है, यानी रिटायरमेंट से पहले थोड़ा इतिहास बना लो। लेकिन चाहे जो भी वजह हो, जनता के लिए ये खबर राहत की तरह आई है। पिछले कुछ सालों में ईडी और सीबीआई का नाम सुनते ही लोगों के मन में डर नहीं, व्यंग्य आने लगा था, क्योंकि जनता को अब समझ आ गया है कि कानून की तलवार का इस्तेमाल अब न्याय के लिए नहीं बल्कि राजनीति के लिए होता है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला इस पूरे थिएटर पर एक करारा तमाचा है। अब हर गिरफ्तारी की स्क्रिप्ट को लिखित रूप में जमा करना होगा, ताकि बाद में कोई ये ना कह सके कि हम तो बस ड्यूटी कर रहे थे। सरकार के लिए यह फैसला लीगल स्लैप जैसा है। चुनावी मौसम में हर शब्द, हर फैसला मायने रखता है। अब एजेंसियों की गतिविधियों पर कोर्ट की नजर है, यानी अब कोई गोपनीय छापा भी ज्यादा गोपनीय नहीं रहेगा। विपक्षी पार्टियां अब इसे चुनावी मुद्दा बनाएंगी। देखिए, कोर्ट को भी लग गया कि सरकार के हाथों में एजेंसियां खिलौना बन चुकी है, और ये बात सोशल मीडिया से लेकर संसद तक गूंजेगी। लोग कह रहे हैं कम से कम कोई तो है जो सरकार को रोक सकता है। एक दौर था जब अदालतें चुप थीं और एजेंसियां बोलती थीं। अब हालात उलट गए हैं। ये संतुलन जरूरी था, क्योंकि जब शक्ति का केंद्रीकरण बढ़ जाता है तो लोकतंत्र का ऑक्सीजन घट जाता है, और सुप्रीम कोर्ट ने शायद यही ऑक्सीजन सिलेंडर खोला है। लेकिन ध्यान रहे, कोर्ट ने सिर्फ चेतावनी दी है, अभी सजा नहीं दी। यानी ये आखिरी मौका है सिस्टम के लिए। अगर अब भी एजेंसियां अपनी पुरानी आदतों पर कायम रहती हैं तो अगली बार सुप्रीम कोर्ट सिर्फ लाल रेखा नहीं, लाल कार्ड दिखा सकता है। ईडी और सीबीआई को अब कानून के हर कदम पर दस्तावेजी प्रमाण देना होगा, वरना पूरा केस हवा में उड़ जाएगा। तो कुल मिलाकर यह फैसला देश के लिए लोकतंत्र की एक ताजी हवा की तरह है, लेकिन सत्ता के गलियारों में यह हवा झोंके की नहीं, तूफान की तरह लगी है। अब देखना यह होगा कि यह लाल रेखा कितने दिनों तक लाल रहती है, क्योंकि भारत की राजनीति में फैसले बदलते हैं और फैसलों की व्याख्या भी। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने वो कर दिखाया जो जनता कब से चाह रही थी। अब सरकार नहीं, संविधान बोलेगा, और यही लाइन आज हर न्यूज रूम में गूंज रही है। ईडी और सीबीआई, अब डर कानून का है।
my Lord, the Chief Justice, Justice Masih, and Justice Oak, my Lord. The first thing which comes to our mind when we think about Justice Oak is a tireless judge, my Lord, a workaholic who has never, my Lord, been seen ill-prepared. And in fact, my Lord, the problem was your Lordships were more prepared than us, my Lord. And this is a genuine right-handed compliment, my Lord. Your Lordships have always read everything. Lord, the most amazing thing, my Lord, which I personally find amazing is that despite, my Lord, such an irreparable loss yesterday, your Lordships put duty first, duty as a judge first. Otherwise, my Lord, your Lordships had an option of delivering judgments virtually also. But, my Lord, this is what, my Lord, which all of us will have to learn to put duty first. Lord, I am not here, my Lord, to advise your Lordships, my Lord, but I'll take the opportunity. Please spare more time for the family. The work schedule you must have followed must be such that your family also may take time to adjust with your continuous presence because you must always been in your chamber working for the matters. But this is their rightful claim, and don't close any options. Your Lordship's services are required, my lords. I wish your Lordships a very good health and a very good second career of your Lordship's choice. And third career. Third career, my lord. I stand corrected, my lords. I stand corrected. And though your Lordships may not believe in God, but I am a believer, my Lord, I pray that may God always be by your side. Thank you. Lord, one more thing. Your Lordships would also be remembered as a judge who took stand when it was required, my lords. In fact, my lord, me and Raju were almost in every case, my lord, on the wrong side of your Lordship's judgment. At the receiving end. At the receiving end. But, my lord, as I have said, that our respect and love for a judge can never depend upon the relief which we got or we did not get. Lord, thank you for being what you are. Thank you. May I, Lord, on behalf of the entire Lord Bar Association, first of all, Lord, offer our very, Lord, heartfelt condolences for this very tragic thing which has happened, Lord, to your Lordships yesterday. It is your Lordship's, Lord, sense of duty, which is the reason why your Lordships are here today. Your Lordship's commitment to the cause of justice is exhibited by the fact that you went for the cremation and came back here today to be with us for your delivering your judgments, and also, Lord, to be with us for this, giving us this occasion, Lord, to speak about your Lordship's career. Lord, it is a matter which I can say on behalf of all the members of the bar that we never felt that any face matters before your Lordships. We never felt, Lord, that if there was a point involved in the matter, you will not get relief. We went back many times even without getting a relief, but we never ever felt that that justice has not been done, Lord. So Lord, I'll reserve the rest for the evening, Lord, but I, Lord, sincerely hope that your Lordships have a very, meaningful third tenure. Of course, your Lordship will miss your Lordship's mother, because that is something which I thought your Lordship would have cherished after retirement. But that is not God's will. Nobody can, Lord, change that. But I'm sure, Lord, your Lordship's health, the rest of your life will be very healthy, meaningful, and as, Lord, fruitful as your Lordships have been so far to the institution. Chief Justice, this is Masi, this is Hope. The first name of my lords and the third name of my lords has already been widely known. It is the middle name of Srinivasa. Lordship's name had the Lord itself. You were a born judge, and throughout your life you have dispensed divine justice. Without any favor, without any ill will, true to your oath. And when in this moment of your extreme personal grief, you have come for the call of duty, on behalf of our association and members, we wish you well, always. My Lord, first of all, our deepest condolences. What can I say? When some judge leaves,
such a vacuum is created that he can never be replaced. That's what I feel today. You know, the Constitution of India had a vision of certain socio-economic goals. And we in the country and the institutions of the country had to work together to realize those goals. But ultimately, the thematic thread that runs through our Constitution is liberty. That's the thematic thread, because the history of civilization is a history of strangulating liberty. Empires have been lost because they strangulated liberty. Slavery vanished because it strangulated liberty. Dominance of cultures, dominance of states. If they wished to strangle liberty, people rose. And therefore, a judge will be remembered only, and those are the judges in this court who will be remembered, when the cause of liberty is served through this institution. Which is why we remember Justice Khanna, which is why we remember how ADM Jabalpur was bad, which is why we remember Keshav Nand Bharti, which is why we remember Patanjali Shastri's judgments. Why? Because the thematic thread of liberty was protected by this court. And you symbolize that. You protected liberty like none else did in this court. And I remember the words of Patrick Henry in the revolution, in the American Revolution, when he said, "Give me liberty or give me death." And John Donne, the famous poet, said, "Give me liberty, for where paradise my prison, I would love to leap the crystal walls." You have leapt that crystal wall that enslaved people in this country, and we salute you for it. Thank you for being what you are and what you were. और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।